Okay, today we shall start a very interesting chapter and the most important chapter. Once again, the percentage. Voice clear आसुची का समझो? Yes, sir. Okay. आमे समस्ते कहीं ना किसी ना किसी के समस्ते जानी कोनोसी ना कोनोसी क्लास रे पढ़िथिले किमा काटू सुनिजो जे परसेंटेज रो बेसिक मीनिंग आमे समस्ते जानी जे व्हाट डज दिस मीन दिस परसेंटेज दैट मींस परसेंट दैट मींस आउट ऑफ द 100 सो वी कैन से भय जदी क्लियर ना आसिला कहबो एक्चुअली डाइली अलगा जारे पढौथिले जोटी पढौथिले से नवा सेट हम रेडी कर सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर एबे देखो ए जो मीनिंग रो ही हम जानिया पर दैट मींस ओडिया रे हम ताकु कहि परिबा प्रति and this cent means this is the 100 so percent means that means the out of 100 out of so that percentage ta kati deile so this percent means out of 100 तो out of 100 जदि मोन कर 8% सपोज गोटे यार कहली out of 100 that means प्रति 100 रे ताहले 8 out of 100 माने प्रति 100 रे 8 तो जे कौन सी गोटे संख्या रो मते जदि 8% दरकार I have to act accordingly that means प्रति 100 रे मु ताहले 8 हिसाब करी करी आकु ताहले मु बढी मते मने कर जने कहिला 8% of 100 8% of 100 जदि आमे कहिले so it represents 8 9% of 100 जने मते कहिला so it represents 9 जने मते कहिला 1500 of 200 so वर्तमान मते देखिया को पड़ियो this 15% of 200 मु जते बेले भी बाहर करिवे परसेंट माने मु जानि गली जे आउट ऑफ 100 परसेंट माने मु जानिले आउट ऑफ 100 दैट इज माय फर्स्ट वन सो जदि मते 15% of 200 दरकार माने जदि 100 को जदि 15 लेखन जदि हे गला देन 200 रे दाले केते हो नाउ आई डायरेक्टली आई कैन से सो दिस विल बी इक्वल टू 30 सो प्रति 100 रे जदि 15 हैला 1 रे दाले केते हो 15 by 100 and out of this 200 we are taking 15 by 100 into 200 that's why this is written as this 15% or out of 15 out of 100 is written as 50 by 1 by 2 माने कोन प्रति 2 रे 1 by 3 माने कोन प्रति 3 रे so like this there is everything there the best जते थेबो हमें तार ऊपर हमें वैल्यू हमें कैलकुलेट सब बेले करियो now हमें जते बेले हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमें पढुतले जे कोनसी गुटे पर्टिकुलर वैल्यू रो मते मन कर 80 हला 80 रो जदि मते हाफ दरकार so what we are doing 8 into half 80 into half so that means this is half of 80 हमें सिखिथिले आगरो भी ऑफ पर जे रहबो ताको हमें सबले बेस रे रखुथिले तो एग्जैक्टली एथि हमें सही टेक्निक हमें लगेबा ग्रेजुअली मुसला बतो जेइलो केमनी सॉल्व करबी जस्ट वर्तमान पे हम एक्चुअली मन एक्चुअली रखिबा जे ऑफ पर जे लागेबो जेमनी हम रेशियो प्रोपोर्शन यूज करथले सेमती हम एठी बेस लगेबा तो ए जो हाफ ऑफ 80 को एठी क्वेश्चन रे कोन लिखि दबो हाफ न लिखि की से जस्ट सिंपल ए त कोन क दबो 50% of 80 लिखि and both means the same whether you are telling 50% of something or whether you are telling half of something that both the things are actually equal now come to one more point गोटे जगह रे मोदेले 20% देछि so what does this 20% means again the same thing will happen this 20% means 20 by 100 of something this 20 by 100 can also be written as 1 by 5 so questions रे मोते 1 by 5 of something पचारिबो जहा then 20% of something पचारिबो विषय there is not any difference between these two things एबे देखो हम एक्चुअली कम करिवा हम जानि गले 20% माने हेगा 1 by 5 तो जेते बेले भी
ऑफ पर जो वर्ड लागिवो ताको हम एक्चुअली बेस वैल्यू एक्चुअली नेबा जदि कोनोसी भी जगह रे मते लेखि थांता a is 20% of b. So what I have to do here is this 20% is 1 by 5. If this 20% is 1 by 5 ताले ऑफ पर के लागि जेरा b लागि जे. So which value will be the b? 5 will be b and a will be 1. So I can say a by b equal to 1:5 or 1 by 5. ऑफ पर के लागिला ताले b लागिला. So b टा ताले जे डिनोमिनेटर वैल्यू नेला and a टा ताले जे न्यूमरेटर वैल्यू ला. गोटे गोटे पिला जे कहउनी 100 120 भी तमे नै परिबा. 100 120 हम नै परिबा. a आउ b. a जदी 100 हैला सॉरी उल्टे दिले मु ऑफ पर जे रहबो से बेस्ट 20% माने 20 बाय 100. सो b जदी 100 हेबो a ताले 20 हेबो कैंसिल आउट करले ये केते हो ताले 1:5. हमें जो जगह रे जोटा दरकार जे करबा फॉर सम क्वेश्चंस we have to remember some fractions and their percentage value in the maximum जगह रे जो जगह रे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माने दैट मींस फ्रैक्शन परसेंटेज नथिबो like 15.25% हला 14 full 2 by 7% हला तो ए बोले जो यार फ्रैक्शन नथिबो देन एट दैट टाइम यू कैन टेक द 100 बिकॉज़ 100 नेला हमु से जगह रे सुविधा है जे जब 10% जदि किए कार दरकार तो 10% माने हम तमले 100 110 नै पारिबो तो हम देटा को मेथड सिखी सिखी जीवा बिकॉज़ गोटे फ्रैक्शन द वैल्यू कैलकुलेशन हमको बहुत एक्चुअली इजी हो जाबो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हमें बे किजरा फ्रैक्शन प्रैक्टिस करबा. म आज बेस रो किजरा हम कैलकुलेशन भी तुमको इले बतेबे. नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन को जंप करबा. ओके सो वन मोर थिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट जेतला हमें हाफ कहू देखो 50% माने हमें केते गले हाफ कले. सो हाफ माने केते हला ताने 50%. सो जेते बेले 50% कहिला 50% मु कोन लिखिली 50 by 100 that's why it came to 1 by 2. जदि मते 30% कहि थांता ताले मु केते आस्तांती 30 by 100 that means 3 by 10 30 by 100 this is equal to केते 3 by 10 ए बेले हमें लिखि थांते जदि हमको रिवर्स देबे हाफ टा केते परसेंट कोन करबा ताले 100 multiply. yeah that's good. So we have to multiply voice echo होनी था. No sir. Very good, thank you. So मु एबे ताले 100 ताले मल्टीप्लाई करबी this will come out to 50. जदि मते को जगह रे कहला जे 3 by 10 टा केते this is also a fraction ताले मु एबे भी कोन करबी ताले 100 मल्टीप्लाई करबी. So 10 10 ja so this will be equal to 30. That means half is nothing but 50%. 3 by 10 is nothing but 30%. तो जे कोनसी जदि फ्रैक्शन को मते दि परसेंटेज रे जदि कन्वर्ट करिवार अछि just I have to multiply it by 100. तो like हमें किछरा फ्रैक्शन एमति प्रैक्टिस करिया like this half and 3 by 10 ताको हम अभ्यास करिया केने मने रखिबा. एवरीबॉडी जे जोटा जानि जे भाई कहि चला 1 by 2 equal to 50%. 1 by 3 will be equal to देखो into 100 करिवो into 100 को लागि के हिबो तानी 100 by 3 हबो आ 100 by 3 हला माने केते हिबो कि 33 फुट नो. Yeah, very good. 33 1 by 4 into 100 को लेके देखो 25. 1 by 5 that will be 20%. 1 by 6 16 छको 96 4 by 6 2 by 3 this is 16 full 2 by 3%. 1 by 7 this will be 14 full 2 by 7%. If you come to 1 by 8 this is 12 full 1 by 2% or this can be said as 12.5%. If we come to 1 by 9 this will be 11 full 1 by 9%. Sometimes it is written as 11.11%. 1 by 10 into 10 gala this will be 10%. 1 by 11 11 नो 9 full 1 by 11%. 1 by 12 12 96 4 by 12 माने के 1 by 3%. 1 by 13 7 full 9 by 13%. 1 by 14 7 full 1 by 7%. 1 by 15 6 full 2 by 3%. 1 by 16 6 full 1 by 4%. In fraction it can be written as 6.25. Once again
1 by 17 can be written as 5 full 15 by 17%. 1 by 18, 5 full 5 by 9%. 1 by 19, 5 full 5 by 19. And this is 1 by 20 equal to 5. Yeah, 5%. No need to do anything more. एबे देखो गोटे जिनस आम ये ध्यान देवा देख किछिटा फ्रैक्शंस को चाहिए बेले बेले क्वेश्चन रे डेसिमल एक्चुअली दे दे डेसिमल माने कोन ए जो 1/3 माने दिस इज 0.33 एवरीबॉडी नो 1/3 माने आउ केते रहिछि 0.33 यू सी जदी हमें 1 होल डिवाइडेड बाय 3 करिवा तो केते हिबो 3 0 0 1 रु 0 गले 1 दशमिक देले 10 3 3 9 10 9 गले लाइक दिस इट विल कंटिन्यू so that means जो जगह रे 1/3 अछि and it is a continued fraction and the repetitive fraction or repeat हो जे at that time we can write down this as the 33.33 we can write if 1/3 equal to 33.33 2/3 will be that double ले जो this can be written as 16.66% जेहेतु 6 पर पुनी 6 आसु जे क्वेश्चन अवेलेबल इन द राउंड अप करके दे दिथो इट मे बी 16.67% जे कोनोसी जगह रे भी 1/3 आसी गला माने यू कैन राइट डाउन 0.33 जदि 2/3 आसीला देन यू कैन राइट आइदर 0.66 और 0.67 एज पर द ऑप्शंस हम ताले प्रिफर करबा तो एबे हमको माइंड रे लागु जे ना एतकी बड़ फ्रैक्शन रे केमदी मने रखिबु देखो फास्ट जिंस तो भाई कोटा भी बड़ बोली एक्चुअली फास्ट के लिए ध्यान दियन जेटा कष्ट एटा मने रहबनी फर्स्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स आमे बेटा मने रखिबार ट्रिक भी एक्चुअली अछि जस्ट यू प्रैक्टिस किछि भी नहीं ता भीतर मु खाली तुमको जस्ट टिके डेली हिंट दे दोछि केमदी मने रखि पारिबो जदि गोटे रेफरेंस भी जदि आमे मने रखि जे इन केस ए फ्रैक्शन भीतर कोटा भूली गले आमे ताकू ताले लिंक करि पारिबा आ हेमिते भी 100 बाय जते कल भी हमको वीडियो होबो केमदी देखो मने करा जो मु 1/2 मने कर कली 1/2 टा केते परसेंट 50% जदि मु 1/2 को आउ थरे पुनी बाय 2 कर देली ताले केते आसी जिवो 25. या 1/4 आसी जिवो सो फ्रैक्शन जते बेले 1/4 जदि आसी गला ताले 1/2 रु 1/4 ताले मु हाफ डिवाइड कली परसेंटेज भी ताले जे हाफ हे जिवो दैट विल बी 1/4 दैट इज 25%. अगेन मु मनकर बाय 2 गली अगेन बाय 2 गले केते आसीबो 25 रो आधा दैट विल बी इक्वल टू 12.5 अगेन बाय 2 कर 12 को 2 भाग कले 6 0.5 को 2 भाग कले 0.25 this will be again 16.2 so like this there is a relation between all these fraction you can say sir 1/3 equal to केते हला 33.1/3 जदि ताकि तुम डबल जदि कर दे सॉरी एथरे जदि मु आउटे हाफ इनटू कर दे आउटे हाफ इनटू गले केते हो ताले जो 0.33 एपट को निगले 0.13 हो ताको भाग कले 666 आसीबो 32 रो आधा केते हो 16 एता जदि हमें आधा करिया 16 रो आधा केते हो 8 2/3 रो आधा केते हो ताले 1/3 so like this there is always a relation actually between all these fractions 1/2 1/3 1/4 1/5 like this किछि ना किछि रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली अछि बाकी मोर समस्त को एक्चुअली एडवाइस रहइबो जे हम यदि स्पीड जदि करिया पे चाहू जे हम परसेंटेज को जदि एक्चुअली हम निज कंट्रोल रे रखिया पे चाहू जे then anyhow we have to remember at least these 20 fractions at least these 20 fractions and I think it is not a big problem actually school time रे हम गोसे से अभ्यास हो जे वर्तमान लैक ऑफ इंटरेस्ट ही एक्चुअली हमको एते रीजन जोटा कि मैं हमको लेट हो जे मने रखिया रे नलेला किछि भी नहीं and the last thing is just practice it no write down once more and more and whenever you are applying the question just will apply without looking at the chart नहीं बिगिनिंग रे नो डाउट तुमरे चार्ट भाई रखि था 1/2 1/3 1/4 एक्चुअली केते बेले लेखि उरे चार्ट रखि था ताको देखि देखि फोकस करो बट लेटर ऑन प्रैक्टिस करी तुम सब अभ्यास करिवो जे हमें चार्ट न देखि केमनी करिया स्टार्टिंग रो भाई इनटू गला को एग्जैक्ट सेम इशू होतला हमें कोन करथिला पणिके आजली मने न रहतला सिधे हमें पणिके आजली देखि दुथिले तापर धीरे धीरे आजली कहला गोटे अभ्यास रेली माने कन्वर्ट हे गला तो सेम थिंग पिला में एटा हला सक्सेस रो प्रिंसिपल हम सब जगह रे मैथ रे सेम लगे पारिया किछि भी फार्मूला हला फर्स्ट देखि देखि अप्लाई करो फर्स्ट लर्न जे तुमको लागिवो ना मु जानि जो कि फार्मूला एक्चुअली भूली जे सेति में मोइले अप्लाई करि पारबो इन द सेम वे एक्चुअली हम ये कोन एक्चुअली करि परिबा जे कोनोसी भी जिंस हला एटा हला ने मेंसुरेशन को हम जिबा
later on we go to the geometry तो सब बेले आमे कोन करे फास्टली फार्मूला गुटे चेष्टा करिया मने रखिया पे जेते मने रहिगला तापर लेटर ऑन हम जेला क्वेश्चन प्रैक्टिस करी करी एक्चुअली बड़ी बड़ी जीवा आमे सेतेल हमहु कोन करबा न देखि कि किछि ना हम अप्लाई करबा न देखि कि किछि रे अप्लाई करबा जोटा दी बड़ फार्मूला देखि दियो नो प्रॉब्लम बट लेटर ऑन क्वेश्चन जेला हम सॉल्व करबा यू कैन फील जे हमर एजि ऑटोमेटिक डाले मने रहि जेबो सो ए फ्रैक्शन को फास्ट हमको इनि मने रखिया को पड़िबो मने रखि रखि चली था संगे गोटे चार्ट इनि रखि था व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द परसेंटेज साइड रे चार्ट गोटे रखि था गोटे A4 साइज पेपर हो कि नॉर्मल गोटे खाता रे हो लेखि कि तमे रखि था नो प्रॉब्लम विल मूव टू द नेक्स्ट एबे माइंड रे गोटे क्वेश्चन आसुथो मोर भी आसुदला समस्तंगर भी एक्चुअली आसीबो सर ए फ्रैक्शन रो ही केवल परसेंटेज रो क्वेश्चन आसीबो कि 1/19 रो बाहर है बा 1/20 रो बाहर है देयर आर सो मेनी फ्रैक्शंस फ्रॉम व्हिच द क्वेश्चंस कैन कम but most of the questions fall in between them and most of the fractions are directly or indirectly related to these fractions one second कहूची maximum questions direct a fraction रो आसी पारे किंबा डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली एतार संगे लिंक है 99.99% जोटा कि 0.11% जो क्वेश्चन 0.1 क्वेश्चन जो रही गला that may be 3/17 एमि बहुत 3/17 दैट इज स्मॉल वन बहुत बड़ो भी मन कर थाई पारे 87.19/27 like this types of fraction but I am telling 99.9 questions comes from this वर्तमान क्वेश्चन होची जोटा तो डायरेक्ट आसी बहि तुम भांगी देबो 1/2 1/3 क्वेश्चन आसी लाइट फुल 1/3 तो के साथ तो कहितले वी कैन डू इट 1/12 जे मने जदी न भी पड़े मु तार रिवर्स टाइप बते दोजे तापरे देखिबा जे एतार संगे इनडायरेक्टली फ्रैक्शंस माने केमदी लिंक अछंती एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दैट फ्रैक्शन मु दीटा को बते अदर फ्रैक्शन ए टेबल रो बाहर जो फ्रैक्शंस थे ताको इले हम केमदी परसेंटेज रे कन्वर्ट करे एंड एतार भितरु जदी अलगा परसेंटेज बची ताके तुम फ्रैक्शन रे केमदी ले कन्वर्ट करबा आई विल टीच बोथ ऑफ दिस सो फास्ट हम देखिबा ए फ्रैक्शन मने कर ताको रिवर्स हम केमदी ए तेर भितर भी मु तुम कहजे जणे मते मन कर कहला जे वेरी सिंपल थिंग मु सेति में कहजी जदी कोडा मने जदी न पड़े देन तो यू कैन ब्रेक इट बट 100 मेथड को हम जदी सेते बेले अवॉइड करबा जेते बेले परसेंटेज टा कोथि तो ना फ्रैक्शन रे थिबा मते जदी मु हे भितर गोटे नउजी मते जने 10% जदी देछि मु तुम कहबे तार फ्रैक्शन वैल्यू केते हेबो 10% 1/10 1/10 केमती जानिलो 1/10 जानिलो केमती yeah that's good I'm telling that one right you are getting the right answer so 10/100 that means ame tale 100 रे tale divide actually kale so मते जने दि 0.5% पचारिला can I do this what will be 0.5% 1/200 yeah very good what I have to do is 1/2 divided by 100 this will be 1/200 so 1/10 it's a very simple thing no mu ebe nebi 16 full 2/3 is how much हमें मने रखि जे देखो 1/6 जने मने रखिनी कोन एक्चुअली करिवो अच्छा हमें 10% माने जदी 10/100 करू जे तो जेते परसेंट मागिवो हमें सेति बाय 100 करि परिबा again sir so now I can do 16 full 2/3 that means 16 full 2/3 by 100 I can do like this 16 3 48 50 by 300 हबो or 3 into 100 I can write down so just cancel out this so this will be again 1/6 whatever may be the formula that may come जदि मते कोडा मने सपोज जनकर मने पड़ला ने सर वो 37 फुल 1/2% फ्रैक्शन केते चार्ट बाहर भी था मु को कहू जे आमे फ्रैक्शन सिखिबा बिकॉज़ फ्रैक्शन सिखिले जे आमे ताको रेशियो रे कन्वर्ट करि परिबा एंड मु सब बेले कहे द रेशियो इज वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऑफ द अरिथमेटिक आमे टोटल पूरा परसेंटेज रे आमे अरिथमेटिक इले लगे ई रेशियो को आमे लगेबा टोटल परसेंटेज रे पूरा सेति में कहू जे लाइन मेथड भी से रेशियो sometimes you have to write down that ratio in the form of the ratio and sometimes you have to write down that form in the fractions बाकी डेटा को हम बुझले बहुत एक्चुअली नेसेसरी सो 37 फुल 1/2% जन फ्रैक्शन वैल्यू जानि पारला ताले कोन करिवो बे को आउ किछि भाबिबा नै बे सेटा रफ सीधा बाहर करिवो
कोन करिवो 37 दुगुणे 74 प्लस 1 75 बाय 200 न करिकि 2 into 100 करिवो so it will be 3 into 25 4 into 25 this will be 3 by 8 I can say like this clear Yes, sir. okay ebe suno so like this is the general form actually how you can convert any percentage given in the fractions into a fraction माने कोनसे भी यदि फ्रैक्शनल यदि परसेंटेज देई छी ताले डायरेक्ट हम सब बेले एई बोला टेक्निक हम लगे कि फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करि पारे एबे कथा उठो छी हम सब बेले एमती नो डाउट इजली मोस्ट ऑफ द टाइम करबा बट we have to try to apply some different method than which will look like a unique method for which you deserve the success आमे ताले आउ कोन एमती किछि टेक्निक लगे परिबा ताको आमे अप्लाई करी के आमे फ्रैक्शन इजली कन्वर्ट करि परिबा जे कोनसी गोटे परसेंटेज को हला मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन गोटे वेरी सिंपल जिंस देखो म बताउ जी देखो इट्स नॉट ए मिराकल बट इट इज ए रियल कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स तो मैं निजे को मते गोटे यार मनकर 11% देई मु ताऊ लिखि पारिबि 10% प्लस 1% लेखि सारिला परे मु ए फ्रैक्शन लिखि पारिबि बिकॉज़ this will be 11 by 100 that means this is 10 plus 1 by 100 that means this is 10 by 100 plus 1 by 100 I can write like this yes or no Yes, sir. so that means this is yes, the sir. 10% yeah this is the 10% this is 1% मते ताले कोन करिवार अछि मु जो फ्रैक्शन रो परसेंट जो परसेंटेज रो फ्रैक्शन वैल्यू without pen and paper bahar karibi I will try to break the given percentage into such type मते जो परसेंटेज देई थिबो मु ताको कोन करबी छोटो छोटो करी के एक्चुअली हमें भांगी देबा को फ्रैक्शन रे भांगीबो जो परसेंटेज रो फ्रैक्शन वैल्यू मु जानि थिबी सेमिति मते मन कर जने कहि देला जे 85% इक्वल टू केते हो आई डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट द 85% जे तुम सडन काटी देबो 17 बाय 20 इट्स ओके अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू मते 80% मते दरकार 80% हम एक्चुअली बाहर कर दे पारिबा दैट विल बी 4 बाय 5 अगेन क्वेश्चन सर 80% हम केमदी मन रखिबा मोर तो तुम समस्त को गोटे रिक्वेस्ट एक्चुअली रहइबो 10 रो मल्टीपल माने जे जत्ते स्पीड पारिबो यू विल फाइंड द रेशियो जत्ते स्पीड पारिबो 60% 3 बाय 5 हाउ बिकॉज़ 20% इज 1 बाय 5 यस और नो 20% यदि 1 बाय 5 हला देन डेफिनेटली देन व्हाट विल बी द 60% 3 टाइम्स दैट इज 3 बाय 5 मते जने पचाला सर 80% केते हेबो आई नो 20% इक्वल टू 1 बाय 5 दैट मींस 40% इक्वल 80% इक्वल टू 4 बाय 5 जने मते पचारिबो 30% he don't know 30% that means I have to make the base is the 10% 10% equal to 1 by 5 30% equal to 3 by 5 sorry 1 by 10 that is 3 by 10 so एमिति हमें कोन करे वर्बली किछि ना किछि एकले एमिति सबले अभ्यास रखिया तुमको लागु तो सर 80% हमें कोन टेक्निक न लगेले तो हमें काटी पारि पारिया बाकी मु सबले के अभ्यास रे ही रही जाय 20% जे तुम 20 बाय 100 करिया तुम अभ्यास यदि थिबो खाली क्वेश्चन यदि 35% पड़े ताले तुम ताको सेमिति इजीली ब्रेक करियो and that habit is very dangerous for the exam so now you see 85% no doubt one can write down 17 by 20 but we will apply some different method I know what is 85% 4 by 5 what is 5% that is 1 by 20 yes so I can write this is the 17 by 20 LCM नहीं के ये जो अभ्यास टा हमें जो रखिया मु कोन कहू जी बहुत ध्यान से ये जो हमें अभ्यास टा जो रखिया एटा हमको बहुत एक्चुअली हेल्पफुल है and how this will be and very much helpful now you will see in very short time I am giving you the concept तो आमे कोन करिवार छी परसेंटेज को एमजिली ब्रेक करी कि जे आमे गोटे फ्रैक्शन एजिली बाहर करिवार अछि मते गोटे यार हमको 55% पचारिला I am not writing the 55 just I am writing some different value you can say let this is equal to 52% जदि मु 50% रो वैल्यू जानि 50% इक्वल टू केते हेबो 1 by 2 and 2% equal to 1 by 50 yes or no yeah that's definitely go so 1 by 2 plus 1 by 50 so this is nothing but 50 एरा केते होलेगो 25 so 26 divided 50 I can write मु कहू जी देखो 52 by 100 भी तमे करि पारिबो 26 2 52 50 2 100 बाकी मु कोन पे हमें ब्रेक करियो धीरे धीरे एक्चुअली हम सही पॉइंट को आसु एबे देखो एबे कोन कहू
मते जदि गोटे जगह रे 318% गोटे रो देछि गोटे संख्यार 318% मते बाहर करिया पे कहिछि देन व्हाट यू कैन डू 318 बाय 100 करी हेलो Yes, sir. Yes, sir. 10% 8. को कोन करबा सस्मिता 18. 300 300, 10% plus 8%. या वेरी गुड देखो एक्चुअली जदि कोनोसी भी संख्या देखो एटा हम फ्रैक्शन हमें लिखु जे मते कोनोसी संख्या रे 318% भी मु करि परिबी मु एबे तर फ्रैक्शन लिखु जे किछि इशू नै 300% plus 18% I can do definitely 300% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते होरे 3 हबो 100% रो फ्रैक्शन वैल्यू 1 200% रो 2 300% रो 3 प्लस 18% will be 9/50 this is 3 पूर्ण 9/50 I can write down this one. You can write down 159/50 you can write that one. मते गोटे जगह रे 260% पचारि what you can do we have to write 2 for the 200% 2 plus part will be 60% that is 3/5 that is equal to 13/5 clear समस्त पर कोन कहू हाँ सर Yes, yes, sir. that's good Yes, so sir. हम ए टेक्निक हम एक्चुअली लगेबा will come across through some difficult fractions difficult though we cannot say difficult but some technical fractions will come now just before that I want to teach one more thing is that जेतले हमें 1/3 करू जे हमें केते लिखिले 33 full 1/3% और this is 33.33% जदि मते 1/3 न देई करी जदि मते 2/3 दे दोची ताहले हमें कोन करू जे इनटू गोटे दुईटे तो खाली करबा तो इनटू दुईटे पे करो ताहले केते होजी देखा या एथिरे 2 मल्टीप्लाई करो ना वी नो 1/3 या वेरी गुड 66 फुल 2/3. या আমি জানি যে 33 পূর্ণ 1/3 লিখিবাটা যা 33 প্লাস 1/3 লিখিবাটা তা এন্ড সেম ওয়ে উই আর ফলোইং দ মেথড যদি এই ভলিয়া লিখিবা ডবল মল্টিপ্লাই করা ये 66% সেম ওয়ে আমি যদি দেখিবা I know 1/4 is equal to केते परसेंट हो 25% 1/4 मते न देगी मते 3/4 देला then what will I do 3 into 25. yeah just 75%. multiply 24 just इधर multiply करो 3 because here it is multiplied with 3 this means this is the 75% आपको हमें बढ़ू जे धीरे धीरे या वेरी गुड 1/7 रो मीनिंग हमें जानी गले 14 full 2/7% if 1/7 is 14 full 2/7 then what will be 2/7 Sir, 28 4/7. Hello? yeah very good Subhuji 28 4/7. yeah very good Sir, come now Subhuti ଟିକେ voice ଟା okay now come to 3/7 सोमे सुबिला है 42 pulse हाँ sir सुबिला ओके को 3/7 टा केते हेबो 42 pull 6/7 yeah good this will be 42 full 6/7 last one 4/7 56. 57. 56 56 8 87 full 1/7. Sir, 57. 56 ना 57 এটা 57 1/7 କରିକି last ହବ 57 full 1/7 हाँ, Sir, 57 57 1/7. okay very good see 8 अबे कितने गला अबे 8/7 so now we can write down this 8/7 as 1 full 1/7 so 56 will be now added to 1 full 1/7 this will be 57 full 1
तुमरा एमती लेखिन एटा मने रखिया को पड़िबो एटा बहुत इंपोर्टेंट गोटे 57.1/7% is a very important fraction most of the time the exam in the exam actually will come across some questions and in which the fraction will be included. That is 57.1/7 is 4/7. This is a very interesting fraction. बहुत इंपोर्टेंट एक्चुअली गोटे 1/4 बहुत थरी आसी आकु एबे बढ़िबा 8 को एबे बढ़िबा एठी गोटे इंपोर्टेंट अछि 1/8 is 12.5 5. 2/8 समझते जानि जो नो नीड टू डू बिकॉज़ 2/8 माने केते हिबरे 1/4 हे जिवो ताले डबल हे जिवो 12.5 रो डबल केते हो ताले 25 हे सो नाउ यू विल राइट डाउन 3/8 Sir, 37. 37.1/7. Yeah, very 1 good. by 2. Yeah, very good 37.1/2% or you can write down this 37.5 सो एथिरु देखो एति की सॉल्व कला पर हमें किछि तो आईडिया पाई गले जे जेते बेले गोटे फ्रैक्शन रे एक्चुअली आसीबो ताकू मो यदि परसेंटेज रे कन्वर्ट करबी इन हाउ इन व्हिच वे आई हैव टू फॉलो द मेथड मते एटी कोन करिया को पड़ी थाना 3/7 जो हमें कोले एमिति हमें मने रखी जे कोड आइली 1/7 ता तो 1/7 ता जदि मु 14.2/7 जदि मने जदि रखी देई जे ताले मते आ प्रॉब्लम हो कि 3/7 बाहर करबाटा कि 2/7 बाहर करबाटा इट्स नॉट ए प्रॉब्लम अदरवाइज हमको कौन करिया को पड़ी थाना 2/7 गुणन 100 दैट इज 200/7 3/7 गुणन 100 300/7 4/7 गुणन 100 400/7 ए वाला करिया को पड़ी थांदा कि ने हेलो Yes, sir. Yes, Okay. sir. सो वर्तमान हमें ताले कौन करे हमें जानि गोटे बेसिक फ्रैक्शन यदि मने रखिबा न्यू फ्रैक्शन तार किछि ना किछि उठे ताले मल्टीपल है नाउ कम टू द लेटर पार्ट व्हाट यू हैव टू डू सपोज मते 4/7 न देकी मते 6/7 दे देला कोन करिया को 84. This says 7 minus 1/7. या वेरी गुड देखो मु कम पे देखो जो 4/7 रे रखिली मु कम पे आको बढ़िनी बिकॉज़ कैलकुलेशन एबे बढ़ी जीवो 5/7 कर दियो 5 गुणन 14 70 पूर्ण 10/7 पुनी 10/7 को अगेन ब्रेक कर 6/7 कर दियो तो 14 6 को 84 पुनी एपटे आसी जीवो 12/7 ताको पुनी ब्रेक कर तो एट दैट टाइम आमे सब बेले देखिबा जे फ्रैक्शन ता जेमिति जेते छोटो हवा हमु सेते हिली भलो जेते छोटो हवा 1/7 2/7 3/7 केते ही गेला 4/7 ना ठीक बड़ हो गेला when you will come to the 6/7 it will be more greater but आमे जानी जे 1/7 टा 6/7 बाहर करबा ठो इजी 2/7 टा 5/7 रु बाहर करबा रु इजी so what we have to do एई जगह रे हमें जेमति टेक्निक लगौ छी एग्जैक्ट हमें सेम टेक्निक लगेबा ए 7 को 6 को मु लिखि पारिबि कि 7 - 1/7 if it can be written as 7 - 1/7 this is 7/7 - 1/7 7/7 is 100% 1/7 is 14.2/7% तो हमको एई जिंसटा हमको इली फोकस करिवार अछि ये हमको जेते छोट हो हमको इली सेते भलो तो को जगह रे कोड अप्लाई करिया दैट डिपेंड्स ऑन अस बट वी हैव टू रिड्यूस द कैलकुलेशन एज फार एज पॉसिबल हमको जेते पॉसिबल हम कैलकुलेशन को हम छोट होइतली करियो ताहले 7 टा 7 जो संख्या तारो केते परसेंट 100% यस और नो Yes, sir. 14 टा 7 रो केते परसेंट डेफिनेटली 7 टा 7 रो 100% 14 टा 7 रो 200% 21 टा 7 रो 300% जेते गुण हेबो कि सेते परसेंटली बड़ी बड़ी जो ए माइनस समस्त शॉर्टकट जानि जो कि जानि न यदि प्लीज आस्क आई विल अगेन आई कैन रिवाइज शॉर्टकट जानि जो कि 100 - 14 पूर्ण 2/7 हाँ 14 minus न करी 15 करतो यस या देखो जेतेले हमें सब्ट्रैक्शन एक्चुअली करू जे शॉर्टकट जस्ट ए मेथड में पर्टिकुलरली मु कहू जे तमे कोन करिवो ए ताकू एक एक्चुअली बढ़े की सबले माइनस करिवो एक बढ़े की 100 रु मु एक्चुअली 14 माइनस करूथिली मु एबे कोन करी 15 कर देबी सो 15 माइनस करले केते होता है 85 एबे कोन करिवो 2/7 थिला
तो आउ केते थाले बाकी रहि जेतला 1 हेबा पे आउ 5/7 दैट मींस या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस एक्चुअली ऊपर एक्चुअली लिखि दबा और किछि नै मने करा जे दीटा मु नै जाउ जेठी यू कैन बी क्लियर 100 माइनस 14 फुल 9/11% को जगह रे अछि तो 100 रु 14 न काटी मु एबे 15 काटीबी 85 हे जो 11 और 9 रो डिफरेंस 2/11 दैट मींस 11/11 मते दरकार दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आई नीड 11/11 I have already 9/11 I need 2/11 आउ गोटे एग्जांपल नौ जी will you more clear suppose 100 minus 27 full 9/13% 100 रु 27 न काटी मु ताले 28 काटीबी 28 काले केते हो ताले 72 9/13 ऑलरेडी अछि I need 4/30 Robin clear Yes, sir. ओके मते देखो एबे देखो मते इजी कोट हला देखो 6/7 जेतेले बाहर कले मु देखली ये भाई 7 रो पाखरे तो अछि why I will multiply 6 with 14 full 2/7 in the same way we can find out 5/7 5/7 can be written as 7 minus 2/7 एटा मैं माइंड सबले करबा एटा मु लेखुची तुमको बतेया पे बट ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट इन द विदाउट पेन एंड पेपर देखो एबे केते होची 7 रा 7 रो केते परसेंट ताले 100% सो आई विल राइट डाउन हियर 100 2/7 टा केते परसेंट 28 फुल 4/7 ताले 100 रु मु 28 न काटी केते काटीबी को 29 69 रु 29 काले दैट विल बी 71 4/7 जाइतला रिमेनिंग थिला को 3/7 3/7 in case of 8 also we can apply no let this is suppose 7/8 I can write down this as the 87.5% I can write everybody can write this one you may ask how we can find out this very quickly yes just I'm subtraction kariba a 7 can be written as 8 minus 1 by sorry 8 now convert into fraction 8 is 100% of 8 1 is 12.5 100 रु 12.5 पळेला रिमेनिंग केतेला ताले 87.5 मते ने पचला सर हाउ आई कैन फाइंड आउट 11/13 सपोज कोनोसी भी जगह रे आसिला then you can write down this is the 12 minus 1 sorry 13 minus 2/13 13 ता 13 रही 100% and this 2/13 equal to 13 सदा माने 14 पूर्ण 91 18/13 this can be written as 15 full 5/13 केते थाले माइनस करिवो 15 न काटी केते 16 so 84 full 8/13 कारो डाउट हला जदी पचारो सर 2/13 टा केमती सेटा क्वालिटी कहबे 1/13 टा में जानी जे 1/13 टा केते 7 पूर्ण 9/13 हां सर नॉर्मली 200/13 भी माइंड करि परिबो 13 के 13 7 13 के 13 लिखि दो फटाफट एबे देखो मते एबे एटा 11/13 न दे कि मते एटा 14/13 दे पारिबो कि नै जे को मते दरकार जे 14 टा 13 रो केते परसेंट once again I am repeating I have to find 14 is what percent of 30 एटा भी देखो हमें कोन करबा फ्रैक्शन को परसेंटेज रे कन्वर्ट करबार अल्टरनेट सॉरी कोन दामने हमें मेथड जानि रे इनटू 100 करबो तो हां सर इनटू 100 हमें करया आगे एई जगह रे देखो हमें इनटू 100 न करी कि हमें एठी आंसर एकरी बाहर करी परिबा इनटू 100 न करी कि केमिति मु देखो तुम करूची 14/13 को मु ब्रेक करी परिबी 13 plus 1/13 या वेरी गुड सो नाउ यू सी 13 टा 13 रो केते परसेंट 100% and 1 टा 13 रो केते परसेंट 7 full 9/13 just add both these things 100 out 7 this will be 107 full 9/13%. Let me write down suppose 15/13
15 can be written as 13 plus 2 by 13. 13 टा 13 रो 100%, 2 by 13 टा 15 पूर्ण 5 by 13%. Now I can add both the things. It will be 115 full 5 by 13. मने कराय जो मते किउडे पचाला जे 27 टा 13 रो केते परसेंट हबो केमति ताक ब्रेक करबी को समय को केमति ब्रेक करबा 26 plus 1 by 13, 26 by 13, 200. या वेरी गुड हमको 13 रो भाई एटे मल्टीपल हमें दरकार ताले मु 26 plus 1 by 13 कर देबी कथा बे उठी सारा में 13 न करी 26 काई कले भाई बहुत इजी 13 टा 13 रो जदी 100% ताले 26 टा 13 रो 200% 39 टा 13 रो 300% directly I can say this 26 by 13 this is 200%. 1 by 13 is get 7 to 9 by 30. So now I can write down this 207 full 9 by 13%. मते गोटे यार मैं भी पचारी पारे we can write down that one the 26 full 26 टा 5 रो केते परसेंट 5 पंजा 25 ताले 25 टा 5 रो केते परसेंट 500% आउ रही गला 1 1 by 5 टा केते परसेंट I can write down 20 so this will be 520 कार बुझिबारे असुविधा होची then you can ask me okay No, sir. 39 by 8 please speak with सस्मिता को पात्र 32 plus 7 by 8. या से कहले 30 No, sorry, 40 minus 1 by 8. 40 Yeah, minus very good. 1 by 8. very good देख रे 32 कहले 7 by 8 पुनी आसुची तो why will not do this as the 40 minus this can be written as 40 minus 1 by 8 now you see the miracle 40 टा 8 रो केते परसेंट थाले 500% 500. या 1 टा 8 रो केते परसेंट 12.5% 12.5. ताले 500 रु 12 न काटी मु धाली 13 काटी देबी so this will be 87 one more example you can take let I am taking suppose 95 by 12 मते ताको परसेंटेज रे कन्वर्ट करिवार अछि ताले कोटा नेबी 95 पाखरे 12 96 yeah minus that's 1 good by 96 minus 1 by 12 96 टा 12 रो 8 गो जेता माने 800% एक टा 12 रो केते हेबो 8 फुल 1 by 3 800 रु मु 8 न काटी ताले 9 काटले 9 काटले केते हेबो 791 4 1 by 3 माने और केते ला 200 2 by 3. मते गोटे यार मन कर पचारी 400 divided by कौन करिया को अच्छा एबे देखलो we can write down this as like this 400 plus 44 full 4 by yes ki no Yes, sir. Yes, sir. 40 by 49 होगा. या केते हेबो एटा हो केते 400% एटा हम रिवर्स एबे करू जे 400% केते की गेलु 4 100% 1 200% 2 एबे देखो क्वेश्चन उठी जे 44 फुल 4 by 9 रो हमें गोटे पढ़ी सारलेनी जे 11 फुल 1 by 9 टा हला 1 by 9 11 फुल 1 by 9 टा यदि 1 by 9 4 4 ताले इनटू कर दियो बोथ साइड so 44 full 4 by 9 equal to 4 by 9 44 so I can write in this 4 plus 4 by 9 9 36 सर केते होता है 40 by 9
like that we can do. हमको आइडियली मने रखिया को पड़ियो बेसिक फ्रैक्शन माने 1/9 1/10 1/11 लाइक दिस किछिटा भी फ्रैक्शन हम जे मने रखि देले ताले हमको इजी ही बटन सब सॉल्व करिया बहुत इजी हे जो एतकी तो जदी कार डाउट है देन यू कैन आस्क फील फ्री टू आस्क एनीथिंग बट किछिटा तो एटा अभ्यास करी मने रखिया को पड़ियो जस्ट डेली चार्ट देखो घर कांथरे नले मार दे पणिकिया मारला मने रही जो मने रहिला जे हमको ताले इजी हे जो एतकी दूर का डाउट है कि पचारो यू कैन आस्क विल गो टू सम मोर वन कांसेप्ट आ गोटे भलो कांसेप्ट सिखियो प्रवीण अछो कि नहीं प्रवीण ଅଛି ସାର୍ बुझी हो जे तो ହଁ ବୁଝି ହଉଛି ओके ଲାଷ୍ଟ ଟା ଟିକେ ବୁଝିନି ओके नो प्रॉब्लम पचारो साइलेंट कहीं रहो ଲାଷ୍ଟ देखो ଟିକେ ओके ओके देखो 444 पूर्ण 4/9 मुझे लिखि पारिबी कि 400 प्लस 44 पूर्ण 4/9 ताले 400 टा माने के 400 माने 400 बाय 100 दैट इज 4 सॉरी 400 टा परसेंटेज रहछि मुदा फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करिबी 400% 100% माने के 1 200% माने 2 300% माने के 300 बाय 100 दैट इज 3 सो 400% माने केते बाइली 400 बाय 100 इक्वल 4 हे जवा आ गुटे रहिला के 44 पूर्ण 4/9 देखो 11 पूर्ण 1/9 आमे ने पढ़ी देना 11 पूर्ण 1/9 इक्वल 1/9 एटा जेना ताले 44 पूर्ण एटा 11 पूर्ण 1/9 44 पूर्ण 4/9 केनते हबा 2 पटे 4 4 आमे इनटू दी करियो सो 2 पटे एबे तुम इनटू कर देली 4 4 4 4 इनटू कर देला परे दैट विल बी द 1/9 टा केते हिबो ताले 4/9 once we got 4/9 just add 4 एला आउ गुटे वे भी तुम देखो करि पारिबो जने कहला सर एमते देखा जाउ मु चार्ट कॉमन नै जिवि take 4 as the common now 1 1 1 full 1/9 again you can break this 100 plus 11 full 1/9 this will be 4 into 1 plus 1/9 this is 1 into 10/9 4 into 10/9 this is 40/9 whatever may be the method you can apply but the concept is the same तमे जेमिति ताको ब्रेक करे डिपेंड्स ऑन तुमको जोटा भी सुविधा हो तमे सही हिसाब रे ब्रेक करो but finally actually we have to conclude it with a fraction or with a ratio आमे गोटे नया कांसेप्ट को एबे जीवा देखो we'll move to a new concept just मानस अच्छा तो मानस हाँ सर वेरी गुड एबे देखो एटा तो हमें गोटे बेसिक गोटे कैलकुलेशन सिखिले तुम जाई कि पुनी वीडियो देखो घरे आइले देखो सब जहां पढ़ाई जे एंड अगेन विल रिपीट अदरवाइज हमको इले जेमति कांसेप्ट क्लियर हो जे कोनोसी भी जगह रे डाउट होती ताले फ्रीली पूरा पचारो once percentage रे तुम जे मास्टरी करि देला आई चैलेंज यू देन यू कैन स्कोर ए मैक्सिमम मार्क इन द मैक्सिमम मार्क हमें देखो एक्चुअली कोन करबा जे परसेंटेज रे हम तो फ्रैक्शन सिखले देन what are the different lines or key lines we have to keep in mind so that we can apply it on all the questions of the percentage there are some lines no age like something is 80% of something this is 80% more than some other thing like this different types of number data at that time actually how we can directly actually will write down the ratio we have to try that one hame jemdi ratio re hame jemdi पढ़ी थिले age 3/5 of b and directly at the time we are writing a is to b equal to 3/5 now we lekho dile mdi a equal to 3/5 of b we are not writing like this directly we are writing a by is to b equal to 3:5 because सेते हम जानि सारी थिले जो ऑफ पर जे त रहला 7 तो कह दिले से भाई डिनोमिनेटर नेबो बाकीटा दाले न्यूमरेटर नेबो ही तो नेबो सेम जिंसो एठी भी हमें लगेबा ऑफ पर जे हला से दाले डिनोमिनेटर हेबो ही हेबो ऑफ पर जे रहला से डिनोमिनेटर हेबो ही हेबो that means the other part will be the remainder sorry numerator मोटी किछि दे तीन लाइन लिखु जी but once again I am telling that we have to practice the fraction हमको परसेंटेज वाली फ्रैक्शन कन्वर्शन बा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन हमको ले आसीबार अछि मोस्ट इंपोर्टेंटली तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज आसीबार डिफिकल्ट नो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आसीबाटा तुम अभ्यास कर जोटी बही रे देखुचो क्वेश्चन को सडन इजिली फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करबा में चेष्टा कर एज क्विक एज पॉसिबल
बिकॉज हमें रेशियो ही लिखिबार अछि मैं गुड एग्जांपल नउची देखो वी विल use this key line in the whole chapter. Let A is 20% of B. Up पर की अछि को B अछि. Base value B. Yeah, very good. B. And what is the fractional value of this 20%? 1 by This is 5. 1 by. 1 Very by good. 5. Now we can write down the ratio. A is to B. Up पर की अछि B अछि. 1 is That to means B will take B. 5 and A will take 1. Directly we can say this will be 1:5. One more line I am writing. Let X is 30% of Y. What is the fractional value of Y is to X? 30%. 3 by 10. 10 is to 3. 10 10 is is to to 3. 3. Very good, very good. You पूरा बहुत conscious अछि. Yeah, 30% of fraction value are 3 by 10. But up पर के लगी थी Y. यदि up पर Y लागेला then this Y will take the denominator value. That means Y is to X will be equal to 10 is to 3. X is to Y will be equal to 3 by 10. हमको बहुत focus करी सारे लिखिबार अछि. Once again I am writing one more thing. Let I am writing suppose Z is 12.5% of Y. What is the value of Z is to Y? Everybody know the fractions of the 12.5 point. That is equal to 1 by 8. 1 by 8. Up पर क्या लगेगा 1 by Y. 8. So Y will take 1. Sorry, Y will take 8 and Z will take. 8. Yeah. I am writing one more. Let P is 133.1 by 3% of Q. इधर फ्रैक्शन वैल्यू कहलो कहते हो प्लीज बी क्विक. Be quick. 100 plus 33. 2 by 3. Susmita 4 Kundia. by 3. Sir, 4 by 3. 1. Yeah, very 4 good. by 4 by. 3. Very good. 4 by 3. अरे एटा 133 अछि. 100 माने केते होटा 1 plus 33 full 1 by 3. That is equal to 1 by 3. This is nothing but 4 by 3. ताले up पर के लागिला ताले Q. Then Q will take 3 and P will take 4. That means P is to Q equal to 4 by 3. ए लाइन टा क्लियर बुझी हला. Yes, sir. Yeah. एबे देखो क्वेश्चन से मैं मुते एमती दे इजीली पारिबो a is 20% of b, then we have to write down a is to b equal to 1:5. X is 30% of y, y is to x equal to 10:3. Like that we have to write. एबे देखो टिके हमें आकु एबे बढ़िया टिके आकु बढ़िया माने कोन मते एबे रिवर्स करी की देबो. If a is to b is given as 1:7, then a is what percent of b? Like this one question maybe. मते को जगह में भी दे पारे x is to y equal to 3 by 5. क्वेश्चन पचारी पारे x is what percent of y. मते क्वेश्चन पचारी पारे p is to q equal to 9:4. then पचारी पारे p is what percent of. एबे ताले हम कोन करि परिबा मु कोन कहली जते देखो एठी हमको परसेंटेज टाइटी मागी जे परसेंटेज टाइटी मागी जे मुई फ्रैक्शन ला लिखि दिनी मोर काम ताले खत्म. What is the equation that we will put? Just this equation. जदि को जगह रे x is what percent of y पचारी देला I will directly write the fraction first. Once again I am telling I have to write down the fraction first. Up पर j भी लागी तो what percent of y. Up पर j लागी तो ताकु तुम बेस रे दे दो बाकी पार्ट को न्यूमरेटर दे दो. Just write down the fraction first. And we everybody know this fraction is equivalent to what percent? We have to multiply it by 100. So just convert the fraction first, then fraction को हमें 100 रे multiply कला percentage पाइबा हमें समझते जानी छो. ताले a is what percent of b. Up पर की अछि को b अछि. Up B पर is g अछि से ताले denominator ताले रहबो. Now I am writing down like this. This is 1 by 7.
into 100. 14 Yeah, by very 2. good. 14 Very, 2 by very 7. good. Yeah, 14 full 2 by 7. yeah. Just multiply it by 100. This will be 1 by 17. We know 14 full 2 by 7. मतलब solve करिबा नहीं. X is what percent of Y? That means 3 by 5 into 100. तोले 5 हेले 5 into 20 कटि जाउची 130 that is equal to 60%. 60. ଆମେ ସେମିତି ବି କହି ପାରିବା 1 by 5 ଟା 20%, 3 by 5 ଟା କେତେ percent ହବ ତାହେଲେ 60%. Same way, come to this P is what percent of Q? P is 9, Q is 4 into 100. 224 शीघ्र को. Yeah, very good. देखो कितने फास्ट है. Yeah, excellent. 225 Yeah, 8 plus 1 हबो 8 टा 4 रो ताले डबल अछि. डबल माने 200 आउ 25% 1 by 4. So this will be 225%. जो माने बुझी पारना ना मैं बुझे दउची एठी ए बोले हे जो 8 टा 4 रो 2 गुण माने ये जो 200%. 1 टा 4 रो 1 by 4. This is equal to 25%. So this will be 220. This is a very simple concept. दीटा को क्लियर है गलो. A is what percent of B एमि फ्रैक्शन देले बाहर करबो और A is to B equal to 1 by 7 परसेंटेज मागिले हम बाहर करि पारिबो. अगेन एतकी बुझियला ना समस्तंकर. Yes, sir. Yes, sir. एबे क्वेश्चन देले मोर और लेस वाली दे लागियो. More or less. Let I'm telling A is 10% more than B. A is 10% more than B imply that A is to B equal to B. देखो मु कोन कहया भी चाहू. To 10. Yes, मु कोन कहया भी चाहू जे देखो. Okay. This 10% of fraction value 1 by 10. Just गोटे लाइन एक्चुअली मने रखि त. आमे जो 10% इक्वल टू लेखो न जो 1 by 10 ए तार मीनिंग हला का रे प्रति 10 रे 1 और प्रति 10 रे 1 माने जे कोनसी संख्या भी हो तार मते केते परसेंट बाहर करबा कि भाई 10%. 10 रो 10% हला 1. आमे जो लेखु जे 3 by 5 into 100 equal to 60%. Or you are directly writing 3 by 5 is nothing but 60%. एतार मीनिंग कोन 5 रो 60% हला केते दाम रे 3 हला. That means जो संख्या 5 हेबो तार 60% 3 हेबो. जदि 10 हेबो ताले 6 हेबो. जदि 15 हेबो ताले 9 हेबो. जदि 500 हेबो ताले एपटे 300 हेबो. But the ratio will always remain the constant, that is 3:5. So now you see here, but just a minute. You see A is 10% of B जदि देथा ना ताले A is to B आमे केते लिखले 1:10. एठी भी ओरिड हवार किछि ने. Now one more word you will come, that is the then. Comparison होई छि ताले नहीं कि दीटा वर्ड एबे ताले मने रखिबा. या तो ऑफ परे थिबो नले तो देन. No word is used in the percentage except these two words. ए ऑफ परे जे थिबो किमा देन संगे जे हेबो से ताले सबले बेस रे रहबो. नॉर्मल जिंस रे मु कहूजी देखो तमो एज मने करा जो 15 हो जे मो एज सब 30 हो. मु जदि पचारी तमो एज ता मो एज रो केते ताले त मो एज को तळे रखिबो ना तमो एज को डेफिनेटली तमो एज को रखिबो. That means your age will be in the numerator, my age will be in the denominator. You will be 15, I will be 30. That means 15 by 30 equal to half. तापरे कि तो तमे कहू जना मो बयसरा तम बयसरा आधा. That means जा संगे comparison हेबो that will come in the always that will come in the denominator, and the value which will be compared will remain in the numerator. And the keyword that you can follow is one is off, another one is the then. Either यदि क्वेश्चन ऑफ थिबो ऑफ परे जो भी वैल्यू थिबो that will be in the denominator, then परे जे हेबो that will be in the denominator. ए जगह मते then देला 10% माने 1 by 10 ताले b तो भाई 10 हवाटा ताले सुनिश्चित. जदि खाली 10% देथा ना 1 by 10 10% अधिक ताले न्यूमरेटर से मिसी जाई कि डिनोमिनेटर से मिसी केते होता ना 11 हो जिवो. बिकॉज़ 10 रो 10% 1. जदि b जदि 10 हला ए ताटू 1 ताले अधिक होबो ना कि से ताले 11 हो. One more example I can take. Let this is x is 48 full 4 by 7% more than x is 2 y केते. आमे एबे सिखि सालेनी
This 48 28 full 4 by 7 is nothing but 2 by 7. Subha jaଉଛି na? Yes, sir. Yes, So sir. 2 by 7, very good. তাহলে then পরে actually কি লাগি তাহলে y. So now y will be 7. X is 28 full 4 by 7% more. X টা তাহলে অধিক আছে। X টা তাহলে 7 Nine. plus 2 মিশি কেতে 9 নেব এই তাহলে 9:7. very good. One more word you can use. Let's take it. P is 137.5% more than Q. What is the ratio of Q is to P? 137.5% of fraction value, 100% of 1, and 37.5% of 3 by. 3 by 8. Yeah, 12.5 is 1 by. That means 37.5% is 3 by. So that will be 8 के 8 नहीं कितना होता है 11 by 8. एबे देखो. So 1 plus 3 by 8 that is equal to 11 by 8 है गला. मैं तो ताले डायरेक्ट लिखी पारिबी. P is more than Q. ताले Q रा कितने है वो ताले 8. I am writing here. P रा कितने है वो ताले 11 करीब नहीं अधिक होले भी. 11 plus 8 कितने हो ताले 19 है वो. Because मते कौन से मते more than दे. Once again, let we are taking one more example. Let M is 111 full. 11 full 1 by 9% more than M is to N कितने 211 पूर्ण 1 by 9% of fraction value 200 plus 11 by 9 that means 200 माने 2 11 by 9 माने 1 by 9 that is equal to कितने होता है 19 by 9. Now come to M is to N. M टा ताहले कितने होता है then परे जे लागिला से ताहले denominator numerator मिसी की बन्यो 28 by कितने होता है 9 हबो बुझियला Again, sir. ओके एबे मोर देइतला डी परसेंटेज रो फ्रैक्शन कले और वी चेंज इन द रेशियो देइथबो जदि मते ताहले परसेंटेज पचारिथबो देन व्हाट टेक्निक वी कैन यूज सी हियर मते उटे देइजी a is to b equal to 9 is to 8 क्वेश्चन पचारिजी a is what percent more than b कोन कोजी फास्टली बुझी जा दीटा वैल्यू को कंपेयर करया पे मु मूल रूप रा कहूची हम रेशियो पढिला मु कहूची whenever we are comparing two values while is less than and what is the will be the greater than we no need to know the exact value we don't need to know the exact value rather the ratio is sufficient to find the answer a टा और b रो रेशियो 9:8 ए 900 हो कि 1000 हो हमको सेतरे किछि मतलब भी नहीं जदि हमें बाहर करिया पे चाहू जे केते परसेंट अधिक to find 12.5. out yeah very good to find a percentage we just need a ratio ताले एबे देखो जदि क्वेश्चन रे a टा b रो केते परसेंट दोथला ताले मु 9/8 करथली बिकॉज़ a टा एक्चुअली b ऊपर लागू होतला भाई क्वेश्चन को जी व्हाट परसेंट मोर देन b के a टा केते परसेंट अधिक ताले भाई केते अधिक ताले फर्स्ट बाहर करबा 9 टा 8 रु ताले केते अधिक ताले 1 अधिक that is the more than cohesion and that's why we are using this 1 instead of the 9 so 1 by then पर एक क्यों ची b से ताले तोले ही रहेगो into 100 1 by 8 हम इसे सीखी सालेनी that is 12.5% or 12 full 1 by 2% आउरे नहीं जाओ जो let's suppose sorry let p is to q equal to 8:11 मने करा जाओ मते टी कहि छी कोन ना q is what percent more than p 37.5. या very केते अधिक तो 3 37.5% गोटे यार मते मन कर देई छी
let m is to n will be equal to 19 is to 17 क्वेश्चन पचारि पारे जे m is what percent more than n केते अधिक था माने 2 this gap is 2 हाँ सर so this will be 2 by कहा ऊपर लागू हबो n ऊपर 17 into 100 17 17 रो कोन पढिले 5 पूर्ण 15 by 17 yes तो 17 पंजा 5 या सेटा हला 1 by 70 2 into कर दियो देखो भरवाली देखो कर 2 into वाले केते हेबा 10 पूर्ण 30 by 17 हबो तो 10 पूर्ण 30 by 17 नहीं कि 11 पूर्ण केते हिजो रेटा 13 by 17 so this can be written 11 full 13 by 72 केमदी देखो 1 by 17 टा में जानी जे एटा 17 पंजा 85 15 by 17 2 by 17 माने 2 into कर दियो ये 10 हेबो ये 30 by 17 हेबो और 17 रो एटा केते बडा 30 by 17 टा 1 पूर्ण 13 by 17 तो 10 सही थलानी और 1 पूर्ण 13 by 17 मिसी जेबो that will be 11 full 13 by 70 समझते क्लियर है की तो हेलो ओके we'll take one more example see मने करा जो x is to y equal to 17 is to 5 then x is what percent more than y please be quick 19 please शीघ्र 12 by 17 240. very good 240% yeah 240% it's a very simple thing देखो 5 टा 17 होइली 12 अधिक सर स्क्रीन आसुनी आसुची स्क्रीन करो शाश्वता सर कटि गला रिकनेक्ट हेबा परे आ आसुनी स्क्रीन लेफ्ट करके आउथरे जॉइन कर दियो प्लीज लेफ्ट करो आउथरे जॉइन कर दियो आई एम वेटिंग प्लीज लेफ्ट कर दियो आउथरे जॉइन कर आसिला अच्छा सर शाश्वता जॉइन कला तो हेलो आज्ञा ओके ओके देखाइबे देखो आमे जो बाहर गले देखो 12 ताहले अधिक हला तो आमे एठी कहि परिबा देखो 12 टाइम केते जे अधिक 5 रो सॉरी 17 टा 5 रो केते 12 अधिक अब 12 टा से जो कहले 240 एक्चुअली देखो गोटे तो भाई 12 by 5 2.4 जना पड़ी जे अदरवाइज आमे जो कांसेप्ट सिखला आमे ताकू से सबले प्रैक्टिस करबा 12 को मु भांगी परिबे कि 10 + 2 बिकॉज़ 10 टा हला 5 रो गोटे मल्टीपल 10 + 2 कली माने 10 टा 5 रो हला केते परसेंट 200% आउ रह गेला 2 2 टा 5 रो केते परसेंट हो 40% कम भाई 1 by 5 टा 20 ता माने 2 by 5 टा केते होरे ताले 40 क्लियर तो Again, sir. या हमें देखो जे फास्ट दीटा सिखिले डायरेक्ट ए टा बी रो केते परसेंट नले ए रो बी रो केते परसेंट जोटी ता माने रेशियो देथबो नले तो फ्रैक्शन देथबो एबे सिखिले ए टा केते परसेंट अधिक बी रु देबो नले एतकी परसेंट अधिक देगी नले मते रेशियो इजिली पचारिबो एठी रेशियो पचारितला एठी मते परसेंटेज पचारि दे इन द सेम वे हमें इजिली करि परिबा less than पाइ में हमें यूज करि परिबा फॉर less than also we can use I am taking some example और एग्जांपल नो जी देखो मने करा जो a is to b नवा a is to b equal to
7:9 क्वेश्चंस में ask x is what percent less than what percent less than गैप बाहर कली ये ताले 2 कम कहा कंपेयर कम सॉरी कहा कंपेयर कम b रो कंपेयर कम 9. ताले मु एबे कहि परिबी या 2/9 into 100 that will be equal to 22 full 2 by 9. या 1/9 हमें जानी गले 11 full 1/9 that means एरा 22 full केते हो हमने 2/9 हम 2/9 टा once आउ गोटे एग्जांपल नो once again we can take x is to y equal to 11 is to 15 and you can see x is 5% less than check this is केते रेडा 4 so this is 4/15 into 100 देखो एटा जने काटी पारिबो या वेरी गुड जने काटी पारिबो जेतु 5 अछि 20 पंजा 3 पंजा 80/1 करी केते तमे you can find out or what you can do is that 1/15 केते रे 6 full 2/3 so 6 full 2/3 हला 1/15 4/15 केते हबो 6 full 2/3 रो 4 गुण 24 पूर्ण 8/3 24 पूर्ण 8/3 को तुम लिखि पारो 8/3 को 2 पूर्ण 2/3 that will equal 26 full 2/3 हेबो और जे चाहू जो एमती काटिया पे जदी एटा करि पारिबो केते एटा 20 पंजा 3 पंजा 80/3 तळे 5 10 15 थिले तो एमती कि ओरी डबार नै जेतले हमको तमटी ऑड नंबर अछि ओटा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करे सही टाइम रे हम कहिले फ्रैक्शन वैल्यू बहुत हेल्पफुल हो आउ टाइम एग्जांपल नै परिबा मने करे जो p is to q equal to 9 is to 14 p is what percent less than q we can say 5 what 5/14 5/14 35 1 5/7. yeah एबे देखो 1/14 टा केते 7 full 2/7 सॉरी 1/7 5 टीचर मल्टीप्लाई कर दे 35 full 5 बस टिके हमको मने के देखो 1/14 आइला हमको भिडो नै को भाई कहला 1/14 अछि ना ये 1/7 अछि ना 1/7 डाला 14 full 2/7 1/14 डाला 7 full 1/7 ठीक सेमिति 1/6 डाला 50 सॉरी 16 full 2/3 बट 1/15 डाला 6 full 2/3 एमति तो टिके ताने लिंक करी करी मने रखि दबो खाली आ कोन 1/8 टा केते 12.5 बाकी 1/12 टा केते हिजो ताने 8.25 सॉरी 8 full 1/3 1/16 टा केते हो 6.25 हो एमदी टिके हले रिकॉल करी के हमें नॉर्मली जोन से सिखितले हम बार बार रिकॉल करके मने रखो एमदी हम बार बार ले रिमाइंड डाले करी आले मने रेबाटे ताले सुनिश्चित केबे भूल होनी आ गोटे नउजी देखो m is to n is suppose I'm taking like this is equal to sorry 1 is to 15 then m is what percent less than केते हबरे केते हबरे 14/15 into 100 एबे को इनटू करबी 1/15 रे ना या वेरी गुड हमें कोन करबा 1/15 डाइली बाहर करी 100 रु काटिबा so this will be equal to 100 minus 1/15 टा केते हो 1/5 टा केते 20 1/15 टा तार 3 भाग हो 6 full 2/3 100 रु 6 काटिबो की 7 काटिबा 93 whole 1/3. 1/3 that's good बाहरी वाला क्लियर है कि समझ नंबर
Yes, sir. हाँ सर समस्ते देखो काली क्वेश्चन जो आइली मु आज की जानी के जाउनी तुम देखो आउ थरे काली नले काली वीडियो के लिए जाओ बिकॉज़ एटा पूरा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट उठे जो माने मोठी आगु भी क्लास करथल तुम जानी सारी ऑलरेडी एटा इंपोर्टेंट केते परसेंटेज प्रोफाइल हम सिंपल इंटरेस्ट बहुत जगह रे अप्लाई करबा नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको सिखेबी आ गोटे छोट आंसर सिखेई देडी हम अभ्यास करू तो ए चैप्टर हमने ता नेसेसरी ता कम एक्चुअली बेसी हमर डीआई रे एक्चुअली बेसी जानी था ठीक देखो आमे दिले म्यूट करो प्लीज आमे देखो आमे दिले कैलकुलेशन जितले करूचे मने करा जो 20% ऑफ 80 पचारी दोजे तो हमको इजली हेते भी किसी डिफिकल्टी होनी बिकॉज़ आमे कोन करी जे 1/5 * 80 कर देला बारे मु 16 इजली कर दोजी बेले बेले किसी कोन होय जेतेले आमे जेतेले आमे परसेंटेज जेमि बाहर करबा एमती नो कि भाई एमती 20% तो एटा नो डाउट परसेंटेज चैप्टर रे रेस्ट्रिक्शन अछि सेति में हेतेली प्रॉब्लम होनी एमती 20% 30% 25% एबुला सबुली आसुची बट गोते कथा हे सबले जि मने रखिता जेते बेले हमको जे ऑड फ्रैक्शंस माने आसो ऑड मु तो बते देबी टिके धीरे धीरे जस्ट एग्जांपल नउजी मते को जगह रे मन कर 57% ऑफ 950 दे देला सो एई टाइम रे मोर जे कैलकुलेशन केते स्पीड all the calculations addition subtraction and multiplication ए तीनटा जिंस रो डिपेंड करू जे मु ए परसेंटेज मु केते स्पीड एक्चुअली बाहर करी पारिबी ए तीनटा परसेंटेज ले डिपेंड करू छ सो देखो एक्चुअली केते केते केमती बाहर करी पारिबा आमे एक्चुअली कोन करी पारिबा ना एटा डायरेक्ट आमे बे लिखि दे पारिबा 57/100 बाकी मु एबे तुमको एक ट्रिक बताउ छी देखो आई हैव टू ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स one is 50% and the other is the 7%. That is very important. 50% माने कितने दाले आधा and 7% very simple. Yeah, very simple. 950 रो यदि मते 7% पचारे then I can say 9.5 into 7. एला मने रखो समस्ते जे कोनसी संख्या रो किछि परसेंटेज पचारिला दीटा छाडी की डेसिमल दे दो तापर आंसर इनु डायरेक्ट लिखि दो किछि प्रॉब्लम ना बिकॉज़ एथरे कोन एक्चुअली फायदा रे हम कोन एक्चुअली जानि पारु जे हमको त हम जो डेसिमल जो दोची सॉरी ए जो परसेंटेज जो दोची हम बाय 100 करू जे तो आ बाय 100 कोले माने कोन लेफ्ट साइड को शिफ्ट करी हम दीटा हमने डेसिमल गोटे डेसिमल पॉइंट दबो दीटा दी छाडी के 875 रो 4% ता माने के 875 माने 8.75 into 4 8.75 into 4 एमती तो इली लिखिबा कथा तो एई जगह भी हमें देखो जे अभ्यास करे हम बतेबे जे धीरे धीरे आको वीडियो हिजबाबे जस्ट गोटे नंबर करू जे देखो 50% माने फास्ट मोली 50% ली बाहर करिवे एतर 50% केते होइली 475 47 गुणे 94 10 थिबा 5 प्लस 7% बाहर करिवे 7% माइंड समस्त आसीबो 7 into 95 करिवा बट नो से जिंस भाबिले ही कि हमको डेंजर एक्चुअली लागे मु 7 को यदि 55 न भाबी मु 9.5 रे भाबी ताले मते भी जमा में डिफिकल्ट हेबोनी बाकी तुम 55 90 रे इनटू गले ताले प्रॉब्लम बट 9.5 रे करिया पे मते कोन करिया को पड़ियो 7 नु 63.5 रे 3.5 दैट इज इक्वल टू 66.5 हेबो कि नै रे 7 * 9 63 7 * 0.5 माने आधा आधा ता माने 7 रा 3.3 हबो जस्ट मिसै दे 75 6 81 81 प्लस एटा केते बडा 81 प्लस 60 या 541.5 दैट्स वेरी गुड एटा बतेबे एटा हला हमें माने गुडी स्पेशल केस टिले अभ्यास लिख करिया वीडियो हिजबाबे नले एबे तुम रेशियो टाइल खाली सीखी जाओ परसेंटेज चैप्टर रे रेशियो रहिला हमें कंप्लीट हेजिली दरकार करिवा एंड आकु हमें जेते ही पढिबा डीआई रे एप्लीकेशन हला एसआई रे भी हमको बहुत टाइम रे ए बुलिया नंबर को हमें जे फॉलो करिया को पड़िबो जोतरे कि माने बिना फ्रैक्शन रे भी कि हमको सॉल्व करिया को पड़े डीआई रे तो बहुत जगह रे 57% 67% एंड लाइक दिस एक्चुअली जोटा फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करले जे बड़ हो से बुलिया नंबर को हम फेस करिवा सो समस्त मोर गोटे रिक्वेस्ट रहला बुझुजिले क्लास आइले लेट हेची संध्या रे तो टाइम हेजिले कम अछि काली 11 रे सॉरी सेही 10 टा ही क्लास करिवा समस्ते ट्राई करो टिके जे केमती एटा के अभ्यास करियो ए जो 5 6 टा स्लाइड जो पढ़ले नि 5 6 टा 12 टा स्लाइड ए फर्स्ट 12 टा स्लाइड इनते रेडी हे जा हला और पीडीएफ टा पठौ जला से ऐप टा इलुटे प्रॉब्लम थिला तो
कि कन्वर्ट इली होनी मु देखुची अलगा कि अल्टरनेटिवली देखुची नले को पिला को पठे कि ताको नले कहै तुम भितर कार पाखे पीडीएफ कन्वर्टर अछि का पाखे सर एपट सपट सीरियल वाइज होबनी ना सेटा तो प्रॉब्लम माने पीपीटी को डायरेक्ट इली पीडीएफ कन्वर्ट कर देले इली हे जबो अच्छा गोटे काम करिया मुझे गोटे